Hello guys, good morning and welcome to Exampur. Good morning to everyone. Good morning everyone. As you know, we are covering the current issues or the current news which is related to environment and ecology. Environment and ecology is very relevant subject, and the current section of the environment ecology is very relevant. The question came from this section in your examination. So you should focus on the current issues or the current uh, affairs of the environment and ecology. Okay, one article that has published in the Hindu newspaper that we should focus we should focus on the forest in the COP27 that will be held in the next year in this year. Okay, so conference of parties of the UNFCCC. So in last conference of parties of the UNFCCC, that means in the COP26, we were focusing on methane emission, controlling the methane emission and the other net zero emission or other things. In one article, the author told that in 2022 in COP27 we should emphasize on the forest conservation. We should take the forest as a resource, as a precious resource, and firstly try to resolve the problem that has been related to forest management or the other forest related issues. Okay, so in COP27 the editorial was related to focusing of the forest in the COP27. That means what is the COP27? That means the conference of parties. As you know, one institution that is known as the UNFCCC. Okay, United Nations Framework Convention for Climatic Change. This is the UNFCCC, and the member of the UNFCCC or the parties of the UNFCCC meet annually, and that meeting is called the Conference of Parties, that is the COP. And in 2021, the COP 26 has held, and in this year the COP 27 would be happen, or they would be convened by the parties of this conference. Okay, so the editorial is related. We should emphasize on the forest in this COP 27. So there is a chance to make the question from this topic in UPSC examination. So we should try to cover the forest relation dimensions of UPSC, or the forest relation dimension which is related or associated to our syllabus, and that is why today's class is completely focusing on the forest management and the forest related issues. What is the importance of the forest, why we should do care of the important forest, and what is the relevancy of the forest, why we should conserve the forest for sustainable development or the sustainability of the earth. In the last session, we have discussed that what is the health of the earth and what are the factors that affect the health of the earth. But in today's session, we will cover this section, and why this topic. I took this topic. Why we took this topic? Because one editorial was published in the Hindu paper. And what is the theme of the Hindu paper? As you know, that is why this topic we are going to cover. Okay, so I hope you are getting my point. I hope you are getting what is I want to convey to you. Soumya Sekhar. Good morning, beta. Please share this video to your groups and the the students who are who are the student of this channel, and please spread this video to them. That is why they also join these classes, and we will cover in this session all the environmental related issues that is coming in the news or the coming in the picture. If you study these type of the news daily basis, or study this type of the news on the weekly basis, then it would be very helpful when you will prepare for your prelims examination. Then there would be a burden. You will keep away
yourself from the burden of the current or the other studies. Okay, so if you study the current on the daily basis, of you study continuously, consistently, you study the current issues, then it would be very easy when you revise for your prelims examination, and that would be held in 20th or 28th of the May in 2022. Okay, so today's class is depend upon the forest. What is the condition of the forest in the India? What is the meaning of the forest? What is the category of the forest? And why we focus to conserve the forest? Okay, so this all things is related to the forest management. So we should focus on the forest management. Okay, so forest management is a big issue in the India. Forest management is a big issue in the India. Not in the India, it is a big issue in the world as well. Global issue, global problem. Okay, so we should focus on what are the issues, what are the points, key factors, or the key points that we have to discuss. The first is the rising demand for the forest-based products and resultant climate change, deforestation, and the encroachment has caused severe loss to this valuable asset. Okay, so you should know that forest. What is the forest? Forest is basically a resource. Forest. What is the forest? Forest is basically a resource. What is the meaning of the resource? Resource means the material or the things which could be used for the human welfare, or the things which human can use that things for their welfare purpose, or their to complete their need, to fulfill their need. Okay, so resource is the material, or the resource is the things which could be used by the human being for their to complete or to need to fulfill their need. Okay, so this is the forest is basically a resource. So what is the meaning of the forest? What is the meaning of this particular resource? And this resource is very precious for us. Okay, अब यहाँ पर देखो, this is the resource. The demand of this resource has been increasing. The demand of this resource has been increasing. आप imagine करके देखो. I have already shared this session. Yesterday it was published. Okay, सौम्या, ठीक है. अब आप देखो बेटा कि अगर हम आज अपनी बात करें, तो विदाउट फॉरेस्ट क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? विदाउट फॉरेस्ट हम सरवाइव नहीं कर सकते. We cannot survive without the forest or without trees, because trees are the components, or the trees are the elements which converts the energy, solar energy, into the biomass. They are the producers. If they are the producers, that means they are providing the food in the food web. They are providing the food into food web. So without forest, without the vegetation, we cannot survive. We human being or the other mammals cannot survive. So they have a crucial role. They have a crucial role in our ecosystem. Okay. So firstly, the demand. First thing, that is the primary need of these elements, or these component of ecosystem. Second, as the population is increasing, we are increasing. At the present population of the world is the 8 billion population. The total population of the world is the 8 billion population. 8 billion population. To fulfill the requirement of the 8 billion population, the ratio of forest is also needed. In that way, if the ratio of the forest in this with the population is not meet, or the ratio of the forest and the population is not appropriate, then what would be happen? As the population is increasing, the ratio or the area of the forest is decreasing, because we need the land for the shelter. We need to complete the nutritious, to complete our food supply. And that is why if we want to complete our food supply, we need to land surface, we need to agricultural land. And that is why we are clearing off that forest region. We are clearing off that forest. And that is why the forest area is reducing. The area of the forest is reducing with the increase of the population. If the population is increasing, the area of the forest is reducing. And other demands of the forest, that if the population is increasing, that means
we need some things, things that is made by the woods. If you prepare your home, that means you would require some. If you construct your home, or if you construct your building, then you realizes that you will require some wood material. Then the demand of the wood is increasing day by day as the population is increasing in many ways. That suppose the daily use of the forest, daily use means the furniture, timbers. Okay, timbers, you can use forest as a timber. Daily other use as the forest, agricultural land. Agricultural land, there is a requirement of the agricultural land to fulfill the need of the food supply of to need the food of the population. Okay, agricultural land. For the shelter of the people, we deforest the forest. ठीक है, we doing the deforestation. So because of these activities, there is a rising demand of the wood products, and that is why a severe condition has been arising. Okay, arising. Demand for the forest-based products resultant the climate change, deforestation, and encroachment has caused severe loss to this valuable asset. Okay, तो इसकी वजह से इस valuable asset जो this is our asset in our earth, ठीक है, ये हमारा एक तरीके का asset है. Sir, when will Exampur launch will the bilingual batch? I will convey this message to the upper management, and then I will respond you. According to the Niti Aayog, around the 13 million hectares of the forest are being lost every year. This is alarming data. According to the Niti Aayog, we losing the 13 million hectares of the forest are being lost every year. Suppose this is a big data, 13 million hectare, not in yards. This is in hectare. 13 million हेक्टेयर हम लोग लॉस कर रहे हैं. तो आप ये सोचो कि कितने बड़े लेवल पे, ठीक है, कितने बड़े लेवल पे हम लोग लॉस कर रहे हैं इस वैल्यूएबल एसेट का. ठीक. Therefore, it is the need of the hour to understand that forest sustainability is not an option but imperative. ठीक है, forest sustainability is not an option. हमारे पास में ऑप्शन नहीं है फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी का, बट इट इज द इम्पेरेटिव. दिस इज द नेसेसरी. ये जरूरी है. यानी फॉरेस्ट को हमें करना ही करना है, सेव करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं सेव करेंगे तो हम सरवाइव करना मुश्किल हो जाएंगे. सर प्लीज स्टार्ट जीसी लियोंग सीरीज इन द इंग्लिश मीडियम. ओके ओके. तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो के लिए हमें, ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास में इंपैरेटिव है. यानी हमारे पास इसको करना मस्ट है, जरूरी है. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. अब देखो, इंडिया में अगर हम लोग फॉरेस्ट के रीजन्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास में काफी कुछ चेंजेस दिखाई पड़ते हैं. यानी कई जगहों पर हमने गेन किया है, कई जगहों पर हमने लूज किया है फॉरेस्ट रीजन को. तो आप देखो, पॉजिटिव चेंज जो है वो ग्रीन वाले जितने हैं वो पॉजिटिव चेंज को दिखाते हैं, और जहां पे ये रेड वाले हैं वहां पर आप देखोगे वहां पर एरिया जो है वो कम है. तो हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटका और झारखंड, ये जो एरियाज हैं इन्होंने गेन किया है. यानी ये क्या है, इन्होंने गेन किया है. बाकी जो रीजन्स हैं उन्होंने गेन नहीं किया, बल्कि वहां पर लॉस हुआ है. और उसमें अगर आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में लगभग मिनिमम 66% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए. एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है. अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, 33% एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए प्लेटू और कहां पे, प्लेन एरिया में. ठीक है, प्लेन एंड प्लेटू एरियाज में ये 33% होना चाहिए. 66% एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए कहां पे, हिली एंड माउंटेन रीजन में. तो नॉर्थ ईस्ट रीजन और द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज मोस्टली द हिली रीजन, and that is why there is a requirement of the minimum 66% of the area of that states.
ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट का 66% एरिया कैसा होना चाहिए, दैट वुड बी फॉरेस्ट कवर रीजन। अब यहाँ पर आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास में फॉरेस्ट कवर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा था, बट ट्रेंड क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हम रिड्यूस कर रहे हैं, वी आर लूजिंग दिस ट्रेंड। तो ये एक कंसर्निंग मैटर है, इस पे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस एरियाज में यहाँ पर हम लोग गेन कर रहे हैं इस वाले रीजन में, लेकिन यहाँ पर हम लोग लूज कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट को लूज किया कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को हमें शॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट फॉरेस्ट, why these forests are why the forests are important, what are the significance of the forest। ठीक है, 1/3 of the land on the earth is covered by the forest, which play a vital role in the maintaining the hydrological cycle, regulating climate and preserving the biodiversity। फर्स्टली अगर हम लोग देखें तो इनका क्या रोल है, वाटर जो है यानी जो प्लांट्स होते हैं ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को रेगुलेट करने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे, आपको ये पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में एक मैकेनिज्म पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आपको ये पता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है कि वाटर को लेकर के इसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है, यानी वाटर वेपर जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, और यही वाटर वेपर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करके फिर रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट यूज ऑफ द वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये यूज होता है। दूसरा, द प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स की अगर बात करें तो दीज प्लांट्स प्रोवाइड्स दीज प्लांट्स क्रिएट द हर्डल्स इन द सरफेस रन ऑफ द वाटर। जब सरफेस रन ऑफ होता है तो ये क्या करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से ये इनफिल्ट्रेशन को बढ़ा के इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के बाद में ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। They recharge the groundwater. They recharge the groundwater. ठीक है, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। तो ये भी एक बड़ी ये अचीवमेंट है फॉरेस्ट का। तो दो एक बड़ा चीज है, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज में इनका रोल होता है, और साथ ही साथ में ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, दूसरा, रेगुलेटिंग द क्लाइमेट। रेगुलेटिंग द क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखो तो क्लाइमेट में फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्लांट आपने रियलाइज किया हो तो प्लांट जो होता है ये टेम्परेचर यानी अर्थ की हीटिंग से रोकता है, हीटिंग का रिडक्शन करता है। एक एसी यानी 10 एसी मिलकर के जितनी कूलिंग कर सकती हैं उतनी कूलिंग एक प्लांट अकेला कर सकता है, अगर एक मिड साइज का प्लांट रहता है तो। कभी आपने देखा होगा कि कभी ओपन करके यानी ओपन एटमॉस्फेयर में एसी कूलिंग नहीं कर पाती, लेकिन अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में रहो और किसी पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ तो वहां पे आपको कोल्डनेस नजर आएगी, कोल्डनेस समझ में आएगा, रियलाइज होगा। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को यानी जो हीटिंग है उस हीटिंग को बैलेंस करते हैं, हीटिंग को कंट्रोल करते हैं। और हीटिंग को कंट्रोल करने की वजह से ये ओवरऑल जो इंसोलेशन होता है उस सन रेडिएशन को यानी सन रेज का जो एब्जॉर्प्शन होता है
उस एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी फिनोमेना को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेटिक चेंज को या क्लाइमेट को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है कि ये क्लाइमेट को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, रेगुलेटिंग द क्लाइमेट। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। सेकंड इनका एक रोल ये हुआ। ठीक है, विंड्स को, एयर प्रेशर को, इन सब को ये मेंटेन करते हैं, तो इनका अपना एक रोल होता है। थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी, दे प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। Why they preserve the biodiversity? Biodiversity मतलब क्या है कि जो plants होते हैं, they plants are deemed as the producer. They are the producers. Producers means they form, uh, they make the food. Okay, producers means they make the food, their own food. Make food means they convert the solar energy into the biochemical energy. They convert the solar energy into the biochemical energy. If they convert the this solar energy into biochemical energy, and that biochemical energy is being used by the other organism, and this biochemical energy is introduced into the food web. So in the food web, the food is coming from this plant or this plants or the forest, and that is why they are preserving the biodiversity. If you remove all the plants from the ecosystem, that you would see that all the organism will be erased from that, all the organism will eliminate from that particular. How plants help in the infiltration, Soumya? One question is how plants helps in the infiltration. So if this is the plant, okay, if there is a vegetation, suppose if there is a vegetation, okay, this is the surface. If rainfall is happening here and water is flowing from this surface, one area that is the vegetative area and other area that is the plain area. One surface is the vegetative surface and the other surface is the plain surface. So you tell me that at which surface the speed of the water is more? The surface which is nude, the surface which is naked, that surface does not has any vegetation, the speed of the surface runoff is high. So speed of the surface runoff, if the surface runoff is high, then rate of infiltration what would be? The rate of infiltration would be low, because if the water does not stay at that surface, then the infiltration rate would be low. If the water moving rapidly or the water moving very speedily on the surface, then the rate of infiltration would be low. So you can say the surface runoff is inversely proportional to infiltration. Okay, and the surface which is covered with the vegetation, the water does not move rapidly because this vegetation creates the hurdle. If the water stays at this particular area, then the water has the more time to infiltrate below the earth surface. So in this region, the rate of infiltration is high than the naked surface of the and that is why, and that is how this type of the vegetation would help to increase the rate of infiltration, and that infiltration would increase the water, that infiltration would help in the recharge of the water.
ओके, यहां तक की बात समझ में आई। बट सर प्लांट तो इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, प्लांट इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देगा तभी तो हीटिंग को कंट्रोल करेगा, हीटिंग तभी तो रेगुलेट होगी। ठीक है, तो यहां तक की बातें समझ में आई। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग क्लाइमेट, ये सारी फैक्टर्स हैं, इसको आपको यहाँ ध्यान रखना है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। हाउ द फॉरेस्ट आर helping in the poverty alleviation? The poor persons, the person who don't have their own land, the person who does not own any forest or any garden areas or their own land, they are dependent on this type of the forest. As you know, they pick the wood from their fuel requirement of cooking, and they are dependent for the fruits on this, and they take some minor forest produce that from that forest, and they sell that minor forest produce to market, and that is the source of their income. That is the source of their income, and that is how this forest is helpful in alleviate the poverty of any person or the poverty of any region. So forest has the role to alleviate the poverty. They has to provide, they provide the money to the poor people, they provide the money to their people. Poor peoples are dependent on that forest, so they also help in their livelihood. They also provide, the forest also provide the fuel requirement of the poor people. They cannot afford the LPG gas or the other things, and that is why they are dependent for the for wood on this forest, and that is why this is very helpful. Forest provide more than 86 million green jobs. They provide the 86 million green jobs. What is the green jobs? That means the job which would not help harm to the environment. Green job, that means they are related to the environment. If any person, suppose if any region which has any special product, and that special, if any region that has some special plant, and that plant produce some special product that is required, that has the demand in the market. Suppose in the UP, Uttar Pradesh, in the eastern Uttar Pradesh and the Bihar, one plant that is called in locally known as the mahua. That plants, that fruit or the product of that plant is useful to form the wine. That plant is useful to form other things, and the persons which are poor, they pick that fruits, and they sell that fruits in market and get the money. And so that is why you can say that is how they are earning from that forest. So these type of the activity are helping in the poverty alleviation. तो यहाँ पे समझ में आया आपको ये किस टाइप से यहाँ पे होता है. Everyone on the planet has had some form of the contact with the forest. We also has the contact with the forest. Okay, because if you want to construct your building, you need to set a door in your building. Then for the door you would require some timber. If you eliminate all the wood material from your life, that what would be happen, you can imagine. Okay, if you eliminate all the wood material or the material which are coming from the forest, that would be is very difficult to survive. Okay, जब हम eliminate कर दो तो उसके बाद में survive करना मुश्किल हो जाए. ठीक है, we are dependent. They are also at the home of the India submerged humanity. ठीक है, ये क्या होते हैं? Submerged humanity, यानी जो ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए ये क्या होते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. दे आर द फॉरेस्ट आर द होम. ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? उनके यहीं पर आपको देखने को मिलेगा.
दे आर इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली आर द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट। ये इकोलॉजिकली भी पार्ट होते हैं और इकोनॉमिकली भी पार्ट होते हैं, यानी इनकी जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है वो भी फॉरेस्ट से ही डिपेंड होती है और ये इकोलॉजिकली उसके पार्ट होते हैं। जैसे अगर आप अपने यहाँ पे इफ यू लुक ट्राइबल एरियाज, दे आर इको फ्रेंडली, दे बिहेव दैट फॉरेस्ट आर एवरीथिंग फॉर देम। ठीक है, उनके लिए फॉरेस्ट सब कुछ होता है, वो उसकी पूजा करते हैं। हम लोग जो है वो कुछ नहीं करते, हम लोग जो है बल्कि और चीजों को बर्बाद करते हैं। ठीक है, वी आर डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स एंड दे आर प्रेइंग द थिंग्स। फॉरेस्ट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, फॉरेस्ट क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, लाइक द सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क कहाँ पे होता है, आपको पता है कि सिल्क वॉर्म होता है जो कि किस पे होता है, मलबेरी, एंड जिसको हिंदी में शहतूत कहते हैं। शहतूत के पेड़ों पर इसको बेसिकली होता है। टिम्बर प्रोवाइड करता है जो फॉरेस्ट होता है, टिम्बर। जैसे अब आप देखो कि क्रिकेट में जो बैट बनता है उसको लिए लकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप सोचो लोहे के बैट से क्या क्रिकेट खेला जा सकता है, क्या प्लास्टिक के बैट से क्रिकेट खेला जा सकता है? बचपन में खेल लो वो अलग बात है, बट आप बड़े लेवल पे तो उसके लिए लकड़ी होनी चाहिए और एक स्पेशल टाइप की लकड़ी होती है। तो आप सोचो एक बैट की कीमत कितनी होती है उस लकड़ी का, यानी वो इकोनॉमिकली जो है रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो इकोनॉमिकली रोल प्ले कर रहा है। ठीक, सिल्क इंडस्ट्री को और भी जो अदर इंडस्ट्रीज हैं जैसे टिम्बर, पेपर इंडस्ट्री को बड़ी मात्रा में जो है वो यहाँ से जो है रॉ मटेरियल मिलता है, पेपर इंडस्ट्री को। एग्जैक्टली ठीक है, तो रेड सैंडल्स जो होते हैं उनका अपना एक रोल है, तो इनका अपना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। They are also provide the major and the minor forest produce। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपके लिए कई बार यूज में आता है MFN, MFP। ठीक है, MFP जब आता है तो इसका मतलब होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहां से कुछ प्रोड्यूस या कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे हनी, ठीक है, जैसे रबर। ये जो होते हैं, जो पल्प, वुड पल्प होते हैं, ये सब जो होते हैं, इनको अगर हम लोग देखें, वेजिटेबल्स जो होते हैं, तो अब देखो इसमें माइनर और मेजर में, मेजर सच एज द टिम्बर, राउंड वुड, पल्प वुड, चारकोल, फायरवुड, ये सब कुछ जो होता है ये मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, ये इसके मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन जो माइनर प्रोड्यूस होते हैं उसमें जैसे बैम्बू, स्पाइसेस, एडिबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, रबर, हनी, ये सब जो होते हैं, यानी रबर हो गया, हनी हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि दे आर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी हमें मिलते हैं। तो दिस इज द सर्विस, आप क्या कह सकते हो, फॉरेस्ट आर प्रोवाइडिंग अस द सर्विस। यानी अगर हम जाकर के किसी जंगल में चले गए, वहां पे आपको हमें लगा कि वहां पे हनी कैंप लगा हुआ है और वहां से आपने तोड़ लिया और हनी लेके चले आए, तो आपको क्या मिला, एक सर्विस, एक प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला? आप जाकर के कहीं से रबर लेकर के चले आए, ठीक है, साथ ही साथ में आप देखोगे कि जो गोंद वगैरह होती है वो यहाँ पर मिलती है, ठीक, तो गम या इस टाइप से चीजें यहाँ पर मिलती हैं, वैक्स मिलेगा, ठीक है, वैक्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब इसकी कीमत है कि नहीं, अगर हनी आप जाके खुद निकाल लो तो उसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा एरिया है जहां पर कोई भी प्रतिबंध नहीं, कोई प्रोहिबिशन नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन निकाल के लाते तो वो आपको बेचता है, और जब बेचता है तो उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू लगाता है, और मॉनेटरी वैल्यू से वो गेन करता है, क्या, यानी उसको फ्री में मिला और उसने पैसा लिया आपसे। तो इनके अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो रामदेव बाबा जो है कितनी शहद बेच करके, और इंडिया में 90% शहद जो है वो क्या है, इम्प्योर है, उसमें मिलावट होती है, 90% शहद में मिलावट होती है। तो आप सोचो नेचर हमें हर कुछ प्योर देता है, और आज का ट्रेंड हम लोग ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, फिर से ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं। यानी आप देखो इंडिया में या पूरे ग्लोबल लेवल पे, पहले हम ऑर्गेनिक पे ही थे, आज के पहले जनरेशन को देखो, इससे पहले वाली जनरेशन को, तो वो ऑर्गेनिक थे पूरी तरीके से, सब कुछ अच्छी चीजों को ऑर्गेनिक लेते थे, तो कितने लंबे लंबे टाइम तक जीते थे। आज सोचो पुराने लोग 200, 110, 112, 105, 100 साल तक आराम से जी जाते थे।
आज के लोग नहीं जी पाएंगे क्योंकि वो बीच में केमिकल खाना स्टार्ट कर दिए थे। आज हम लोग भी केमिकल खा रहे हैं। अब फिर से लोग जो है वो ऑर्गेनिक तरफ जा रहे हैं और ऑर्गेनिक चीजों के लिए एक अच्छा खासा पे करना पड़ रहा है। आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाओ और एक प्रोडक्ट जो है वो केमिकल बना हो सकता है उसकी कीमत अगर 10 रुपए है, ठीक है, सपोज वो 10 रुपए का है, और वहीं पे आपको बोला जाए कि एक दूसरा प्रोडक्ट वही चीज है जो कि ऑर्गेनिक है, तो हमेशा देखोगे इसकी जो कीमत होगी वो 15 रुपए होगी। ठीक है, तो यानी नेचर पहले हमें फ्री में दे रहा था, तब हम लोगों ने क्या किया, उल्टा सीधा उसके साथ में कर दिया, नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसी के लिए हम एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द फॉरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है फॉरेस्ट से रिगार्डिंग? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। This is not the subject of the state list. As you know, there are 3 lists in the our schedule 7. First is the central list. Second one is the state list. That means the subject which has been enlisted into the central list. That means central government has the power. Central government has the authority to make the rules, regulation on the laws related to that subject or that points. And the list or the subject which has been mentioned in the state list, that means state government has the right to form the law and the regulation on that subject, except some situation, except some condition or the some situation. Okay, as you know, as you studied in your polity, that means central government can form the law on the state list in some special cases or in some special recommendation. Okay, you know, so in general condition, the state government has right to make the law on the state list subject. And the one list that is called the concurrent list, that means this list has that subject which are relevant for the state and the center both. That means the subjects which has been mentioned in the concurrent list, that means in this on that subject, the central government and the state government both have the right to form the law on that subject. But in the case of the conflicts, as you know, that in the case of the conflicts, the central government's law would be preferable. Okay, तो उसे प्रेफर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दिस इज concurrent list 7th schedule of the constitution. Through the 42nd of the Amendment Act 1972, the forest and the protection wild animals and the birds were transferred to the state to concurrent list. ठीक है, यानी ये 42nd अमेंडमेंट के तहत इसको पहले ये स्टेट लिस्ट में था, अब इसको कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया, अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो आपको पता है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत ज्यादा चेंज हुआ था, इंदिरा गांधी ने बहुत चेंज किया था। फिर इसी को काउंटर करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1978 में। ठीक है, ये 1978 में आया था, ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, यानी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने किया था और ये किया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। और इसी के बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1976 में किया था, इमरजेंसी लगाया था 1975 में। उसी के बाद में 1977 में गवर्नमेंट चेंज हुई, और गवर्नमेंट जब चेंज हुई तो मोरारजी देसाई बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर। तो ये बने और इन्होंने इसको चेंज किया, तो इस एक्ट के थ्रू इसको किया गया था। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट में। आर्टिकल 51A(G), आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट it shall be fundamental duty of every citizen
to protect, improve and the natural environment including the forest and the wildlife. ठीक है, यानी it is our fundamental duty that has been mentioned in the Article 51A, okay, Part 4A of the Indian Constitution. And the G part, subclause is the G. You should know about the G. Okay, Article 48A in the DPSP, that means that the DPSP mandates that the state shall endeavor to protect the improved environment and safeguard to forest and the wildlife of the country. So यहाँ पे आर्टिकल 48A में भी ये लिखा है कि हमें फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को करते के लिए सेफ गार्ड के लिए. तो आप देखो कि डीपीएसपी में भी मेंशन है, डीपीएसपी में मेंशन है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी मेंशनड है. ठीक है, और इस ये लिस्ट में कौन सी है? कॉनकरेंट लिस्ट में. किस लिस्ट में है? इट इज इन द कॉनकरेंट लिस्ट. कॉनकरेंट लिस्ट में ये मेंशनड है. तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉनकरेंट लिस्ट में ये है. ठीक है, 46 अमेंडमेंट के थ्रू 42nd नॉट 46 42 अमेंडमेंट के तहत 1976 में इसको हटाया गया था यहां से. नाउ what are the government initiative to protect to conserve the forest? The government has some initiatives, has taken some initiatives. Which initiatives that government has been taken? So firstly, Forest Conservation Act 1980. The government taken place act that is called the Forest Conservation Act 1980. और इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन के थ्रू फॉरेस्ट कंजर्वेशन के पूरी चीजों को यहाँ पर मेंशन किया गया, बताया गया कि किस तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन होता है. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम. हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को सैपल कर रहे हैं, प्लांट्स की सैपलिंग करी जा रही है, प्लांट्स को लगा रहे हैं. ठीक है, तो प्लांट्स की सैपलिंग, नेशनल अफॉरेस्टेशन. सो यू शुड नो अबाउट टू वर्ड्स, दैट इज द अफॉरेस्टेशन. Deforestation and reforestation. Afforestation, deforestation and reforestation. There are three words. Afforestation means to sapple the plants on the land which does not have the forest area, which does not have the forest, that is the afforestation. ठीक है, आपने देखा होगा रोड के किनारे फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, या कोई जमीन खाली पड़ी वहां पे प्लांट लगा दिया आपने. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे फॉरेस्ट नहीं है या जहां पर प्लांट्स नहीं है वहां पे प्लांट्स को सैपल करना, दैट इज द अफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि फॉरेस्ट को रिमूव करना. डी वर्ड जहां पे आता है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है रिमूव करना. तो दिस इज द नेगेटिव थिंग. रिमूविंग द फॉरेस्ट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन. एंड द रिफॉरेस्टेशन मीन्स जहां पर फॉरेस्ट है एक्चुअली एग्जिस्ट करता था वहां पे अगेन फॉरेस्ट को लगाना. अगर किसी वजह से वहां पे फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका है या फॉरेस्ट नहीं है तो उसको अगेन फॉरेस्टेशन इज कॉल्ड द रिफॉरेस्टेशन. सो यू शुड नो अबाउट दीज थ्री वर्ड्स, afforestation, deforestation and reforestation. So National Afforestation Program, one program that has run by the national government or the Indian government, that is called the National Afforestation Program. ठीक है. Third is the Environment Protection Act 1986. Indian government or the Indian Parliament came with a comprehensive act in 1986 that is called Environment Protection Act. And this act came after an incident that is called the Bhopal gas tragedy. Bhopal gas tragedy took place in 1984, and after that Indian government or the India realizes that there is a need of the there is a need of a comprehensive law, either there is a need of the comprehensive act which can ensure the environment protection, which can ensure the environment pureness of the nation, which can enact
the person which violate the environmental rules or the environmental laws. So this is very comprehensive act. In this act, we are also protecting the forest region. We are also protecting the forest region. Okay. Next is Scheduled Tribes and the Other Traditional Forest Dwellers, a recognition of the Forest Right Act 2006. This is also known as the Forest Right Act 2006. ये जो एक्ट है, इस एक्ट में गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल लोग हैं या जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, two words has been used in this act, that is the forest dwellers और second word is the tribal people. ठीक है, ये जो दो लोग हैं, इनको इनके राइट को दिया गया बिकॉज दे आर डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट पे डिपेंड है एंड दे and it is their right that the forest is their resource, their you can say the primary right of that these persons on the forest. ठीक है, इनका प्राइमरी राइट था, इसलिए इनको बोला गया फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल्स को, इनको एक राइट दिया गया 2006 में, एंड दैट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. ठीक है, dwellers means they are dependent on the forest. Dwellers means the persons are who are not living in the forest region completely. No, they are not living in the forest region, but they are depending on the forest, and from 75 more than the 75 years their forefathers are depending on that on the forest, so they are considered as the forest dwellers. ठीक है, तो इनमें से one act is Indian Forest Act 1927. Indian Forest Act 1927. This act was made by the English government or the English, but this is also in force at the present time, and we has amended. We done amendment in this Indian Forest Act in 1907 related to bamboo. In 1927 Act, bamboo was considered as a plant, but the government of India at the present time included this bamboo from the plant and excluded this bamboo from the plant category and included it into the grassland category. And that is why cutting of the bamboo, that is very important, that is very necessary for the northeast persons. It is not illegal now. Okay, so जो English government थी वो क्या करती थी, इसको इलीगल मान रखी थी और जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा था, तो बैम्बू वगैरह को हम लोग अब लीगल कर दिए. बैम्बू कटिंग इज लीगल नाउ. सो नेक्स्ट इज द व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द फॉर challenges related to the forest management in the India. What are the challenges that is related to the forest management into the India? We would cover this topic, these challenges into the next class. Okay, we would cover this topic into the next class. And I hope you are getting the points, you are enjoying this session, and we will meet into the next session. And please download the Exampur official application, and you will get all the PDFs and all the study material that are relevant for your examination on that platform. And do like this video and subscribe this channel and share this channel to your friend circle. Share this channel between or among the aspirants which are preparing for the civil services examination and who are going to appear in 2023 examination. So please share this video and this channel to the among them. Okay, so we will meet into the next class. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.